Hello everyone, this question appears in Class 6 NCERT chapter of Understanding Elementary Shapes. This is third question of its exercise 5.2. So the question says that which direction will you face if you start facing? So firstly हम direction ड्रॉ कर लेंगे. East, west, north and south. So in part A, which direction? East हमारा direction है east की तरफ. So east, west, north and south. ईस्ट एंड मेक हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. सो ईस्ट में है हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, तो हम यहाँ आ जाएंगे. सो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट. पार्ट बी इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. 1.5 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. डायरेक्शन हमारा ईस्ट. सो ईस्ट से 1 फुल देन हाफ. अगेन डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट. पार्ट सी इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. West and make 3/4 revolution anti-clockwise. So in west and 3/4 anti-clockwise. So 1, 2, so हो जाएगा 3/4. So direction हो जाएगा north. Facing and part D is north, south, east and west. साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन. तो साउथ है 1 फुल रेवोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अगेन साउथ. शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन? सो एंटी क्लॉकवाइज हमने देखा हम साउथ में आते हैं एंड देन क्लॉकवाइज देन अगेन हम साउथ डायरेक्शन में आ जाएंगे. सो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में हम अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में आ रहे हैं. सो इट डजंट मैटर वी काउंट इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. थैंक यू.